अच्छा जी, so अस्सलाम alaikum and a very good afternoon to all of you. You must be kind of tired after a whole day of lectures, but then that's the way it is. So yesterday, half of the time we were simply discussing the um, G. Okay, अच्छा जी. So yesterday half the time we were discussing about the substage, and now uh, only part of the nose was covered yesterday. So up, I want to do the nose with you, especially the important parts in the nose, जो आपके practical और आपके examination point of view से important है. Nasal cavities आपको पता है, they are divided into right and left. इनकी boundaries, they are extremely important. You have to know them. ये जो superior boundary है ना, this is formed mainly by the cribriform plate of the ethmoid. Okay, the cribriform plate of the ethmoid and some contribution from the frontal bone and the nasal bone. So together, frontal from anterior to posterior, it is nasal bone, the frontal bone, the cribriform plate of the ethmoid. बेटा मैं क्लास ले रही हूँ. अच्छा ठीक है. Sorry, there was an interruption. So it is nasal bone, frontal bone, the cribriform plate of the ethmoid, and part of the sphenoid bone as well. All these make up the roof of the nasal cavity. Floor is formed by, and this part is the horizontal plate of the palatine bone. Medially nasal septum होगा. Lateral side पे क्या है? अब हम करते हैं lateral wall of the nose. The ever important आपके examination point of view से particularly lateral wall of the nose is extremely important. बेटा lateral wall of the nose हमने थोड़ा सा discuss किया था इसको, और आपसे मैंने कहा था कि in the lateral wall of the nose you have these shelf-like projections. Bones हैं that project out from the lateral wall of the nose. जिस तरह आपको मैंने एग्जांपल दिया था, you have shelves, one shelf, second shelf, third shelf. ये जो shelves हैं, इसी तरह के shelves you have them in the lateral wall of the nose. These shelves are called nasal conchae. Concha is singular, conchae is plural. ENT surgeons इसको turbinates भी कहते हैं. So concha and turbinate is one and the same thing. Anatomists इनको concha बोलते हैं because they are made up of bone. ENT surgeons इनको turbinate बोलते हैं because they say when the bone gets covered by mucous membrane, so they are called turbinates. ठीक है जी. अच्छा जी. So you have a superior concha, a middle concha and inferior concha. ठीक है. Now अब आपको पता है कि जब शेल्फ बने होते हैं एक दूसरे के ऊपर, 2, 3, 4 शेल्फ हैं, तो in between the shelf you have a space. ठीक है. शेल्फ के ऊपर आप चीजें रखते हो, बर्तन रखते हो, डेकोरेशन पीसेस रखते हो, जो भी रखते हो. उसके बाद नीचे एक और शेल्फ होता है, दोनों शेल्फ्स के दरमियान एक स्पेस होती है. उसी तरह ये जो बोन्स हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्का, ये 3 शेल्फ्स हैं. इन बिटवीन दीज शेल्फ्स यू हैव these spaces or gaps. इन spaces या और gaps को हम कहते हैं meatus. ठीक है. So below the concha you have a meatus. मैं पहले इनको enumerate कर दूं. Superior meatus, middle meatus,
inferior meatus. And above the superior meatus, you have this area, which is called sphenoethmoidal recess. अभी थोड़ा सा इनके बारे में हम आगे करते हैं. इससे पहले कि हम meatus पे जाएं and what is present, let me tell you one thing. हम पहले ये discuss कर चुके हैं. This is the superior meatus, this is the middle meatus, and this is the inferior meatus. Please note the inferior meatus is made up of a separate color. The reason is that the superior meatus and the middle meatus together, they are made up of ethmoid bone. So they are part of the ethmoid bone. I repeat once again, the superior and middle meatus are part of the ethmoid bone. The inferior meatus is part of the, it's an independent bone. किसी bone का हिस्सा नहीं है. It's an independent bone. These meatuses are covered by a mucous membrane, which is very vascular, highly vascular mucous membrane, and it is this highly vascular mucous membrane that contributes to humidifying of the air. So the air that passes through the nose, at times it is very hot, at times it is very cold, depending on the weather. So ये जो air है, this gets humidified, the temperature is brought down to the body temperature because of the presence of the blood vessels present in the mucous membrane overlying these concha. One by one, let's do the recesses. Now, इस दौरान में, if you have any questions, so please don't hesitate to ask me questions, because ये number one important part है और number two थोड़ा सा tricky भी हो जाता है. We start with the sphenoethmoidal recess. I told you it is superior to the concha, superior concha, and also posterior to it. So over here, ये जो part है, this is sphenoethmoidal recess. ये ठीक है. ये देख लीजिए, बताया था superior concha is made up of ethmoid bone, और ये पीछे, ये this is the body of the sphenoid, this is the sphenoidal air sinus. Okay, this is the sphenoidal air sinus. So ये जो recess है, this is between the ethmoid and the sphenoid. That is why it is called the sphenoethmoidal recess. Or since is recess, behind the recess you have the sphenoidal air sinus. So ये जो sphenoidal air sinus है, this opens into sphenoethmoidal recess. करीब तरीन है इसलिए यहाँ पे करेगा. बेटा ये जो एयर, आपके जो एयर साइनसेस हैं, मल्टीपल एयर साइनसेस, देखिए ये फ्रंटल एयर साइनस है. You will do them on Friday, inshallah. तो these are lined by mucous membranes. Mucous membrane जो है, obviously secretions produce करती है. That secretions have to be drained. तो पर कहीं तो drain करना है ना. तो ये जो sphenoidal air sinus है, this drains into over here into the sphenoethmoidal recess because करीब तरीन outlet यही है. उसके बाद this is the superior concha, this is the middle concha. The gap in between them, this is the superior meatus. Okay, so between the superior concha and the middle concha, you have this part which is called the superior meatus. इस meatus में you have the opening of the posterior ethmoidal air cells. अब ये posterior जो ethmoidal sinuses हैं, air cells, okay, they drain into superior meatus. Sorry, every time there's a gap, so I just take a sip of water. यहाँ मेरे पास ही पड़ा हुआ, because it's very hot over here in Lahore. अच्छा जी, now comes this part. Beta, this is extremely important. ये middle meatus, the anatomy of middle meatus, what opens into the openings into the middle meatus,
ये दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहली बात तो ये है कि द मिडिल मीटस, ये देख लीजिए, इसको मैंने कहा था स्फिनोइडल साइनस है और इसको मैंने बताया था फ्रंटल साइनस है। ठीक है, दिस इज द रूफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन। ये नेजल, ये पार्ट फ्रंटल बोन का था ये, एंड दिस वाज द नेजल बोन। ओके, ये हमने रूफ बना दी है, दिस इज पार्टली द स्फिनोइड, ये स्फिनोइड बोन है। ओके, दिस इज द सुपीरियर कॉन्का, और ये जो काट दिया है ना, दिस इज द middle concha. This cut part is the inferior concha. The superior, middle, and inferior concha. Okay, lying between the lying between the middle and the inferior concha, you have this middle meatus. ये सारा एरिया जो है, ये enlarged view है, ये middle meatus है, which is lying between the middle and inferior concha. Okay? अच्छा जी, अब इस concha में please note that this is a semilunar or moon shaped groove. इस groove को कहते हैं hiatus semilunaris या semilunar groove. Lunar is moon. So half a moon, पूरा moon तो यहाँ तक होगा ना, it is half a moon, semi-lunar hiatus या hiatus semilunaris. Okay, इस hiatus का जो anterior part है ना, anterosuperior part, ये इधर, this is kind of slightly dilated, और इस anterior anterosuperior part को कहते हैं infundibulum. So semilunar hiatus का जो anterosuperior part है यहाँ पे, this is called the infundibulum, ethmoidal infundibulum. Ethmoidal इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि superior and middle concha are parts of ethmoid bone. ठीक है जी, so this is ethmoidal infundibulum. अब this infundibulum is connected to the frontal air sinus. ये frontal air sinus है, ये infundibulum है, hiatus semilunaris का superior part, anterosuperior part. This infundibulum is connected to the frontal air sinus by way of this canal कह लें इसको आप, या इसको आप टनल कह लें, या जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, या डक्ट कह लें. This is frontonasal duct connecting the frontal air sinus to the nose. Frontonasal duct. So by way of the frontonasal duct, the frontal sinus opens into the infundibulum of hiatus semilunaris. Besides this, ये opening है. अब इसी semilunar hiatus की बात मैं कर रही हूँ. This is the semilunar hiatus. This is the opening of the maxillary air sinus. ठीक है? So इसमें, इस hiatus semilunaris में frontal sinus खुल रहा है, इसमें maxillary sinus खुल रहा है, और ये जो है ना, this is the opening of anterior ethmoidal air cells. So तीन structures यहाँ खुल रहे हैं. You have the frontal opening of the frontal sinus, anterior ethmoidal air cells, and maxillary air sinus. Now immediately above this semilunar hiatus, ये जो semilunar hiatus आपको बताया था, ये groove है. Immediately above the semilunar hiatus, obviously below the middle meatus. हम middle meatus की बात कर रहे हैं, before the, below the middle concha. ये middle concha है, ठीक है? So immediately below the middle concha, you have this dilated part. This dilated part is called ethmoidal bulla या bulla ethmoidalis. ये जो dilated part है called bulla ethmoidalis, this dilatation is produced by middle ethmoidal air cells.
बेटा पोस्टीरियर एथमोइडल एयर सेल्स हमने यहाँ खोले थे सुपीरियर मीएटस में, ठीक है, बिटवीन द सुपीरियर एंड द मिडिल कॉन्का। एंटीरियर एथमोइडल एयर सेल्स हमने यहाँ खोले हैं सेमिलुनर हाइटस में, और अब मिडिल एथमोइडल एयर सेल्स दे प्रोड्यूस दिस बंच called bulla ethmoidalis and this is where it opens, ठीक है। सो मिडिल meatus of the nose, ये एक क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका, enumerate the openings in the middle meatus of the nose, सिंपल। उसके बाद आप गिनने बैठ जाओ कौन से, सारे ना गिनवा देना, सारे एयर साइनसेस इसमें ओपन नहीं करते, बट यू हैव टू रिमेंबर कौन से पैरानेसल साइनसेस कहाँ ओपन करते हैं। यू विल डू देम ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह, उस वक्त तक होपफुली आपको कुछ समझ आ गई होगी। नाउ जी कमिंग टू द inferior meatus. Inferior meatus ये inferior concha है, which is an independent bone, ठीक है। Below the inferior concha you have the inferior meatus. So अब इस inferior concha को जब हम काटते हैं तो this is what it looks like. ये inferior meatus आ जाता है, and opening into the inferior meatus you have the nasolacrimal duct. Just one structure opens into the inferior meatus, the ever important structure, you have the nasolacrimal duct. वही nasolacrimal duct जो आपके medial end of the medial canthus of the eye से शुरू हुई थी, dilatation, lacrimal sac, और फिर into the lacrimal duct and opens into the inferior meatus of the nose. So this is the inferior meatus of the nose, where the nasolacrimal duct opens. किधर जाकर जी, ठीक है जी। So now this part, this is the area where all three meatuses या recesses जो हैं they open. Now this area is at the junction of the septum and the lateral wall of the nose, ठीक है। This is called common nasal meatus, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ओपन करता है ये पार्ट, okay। By the way, this is the opening of the eustachian tube, pharyngotympanic tube, बड़ी अच्छी नजर आ रही है, मैं दिखा दूं, ये आगे जाके अभी हमने करनी है। ब्लड सप्लाई पे आ जाते हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द नोज। पहले लैटरल वॉल पे कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी है, ये भी ऑफ्थैल्मिक की ब्रांच है, ये पोस्टीरियर ऑफ्थैल्मिक आर्टरी है, ये भी ऑफ्थैल्मिक की ब्रांच है, ये दोनों ऑफ्थैल्मिक की ब्रांच है। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, besides remembering the names of these blood vessels, आपको ये भी बताना है कि ये किसकी ब्रांच होती है। इवन आपके एमसीक्यूज में बाज़ दफा नेम इज गिवन करेक्ट, लेकिन पूरा एमसीक्यू पूरी अगर आप ऑप्शन पढ़ें तो उसमें नाम the name could be wrong, तो source of the artery, the origin of the artery वो गलत है। मतलब like इस तरह मैं लिख सकती हूँ ना, anterior ethmoidal artery branch of maxillary artery, तो ऐसा तो नहीं है। anterior ethmoidal तो है लेकिन वो maxillary की ब्रांच नहीं है, ओके। सो प्लीज आप वो प्रॉब्लम ये होता है कि जी एमसीक्यू बाहर ठीक लिखा होता है, वो गलत हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि आप लोग पूरी ऑप्शन नहीं पढ़ते और मैं कॉपी पेस्ट करती नहीं हूँ। दैट इज माय प्रॉब्लम। इनफैक्ट कोई भी नहीं करता। आप लोगों का ये इंप्रेशन है कि जी किसी एक किताब में से कॉपी पेस्ट हो जाता है। एनीवे, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, को हम बहुत दफा ये बहस कर चुके हैं। अच्छा जी, सो यू हैव पोस्टीरियर एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, you have posterior ethmoidal artery, they are both branches of ophthalmic artery. उसके अलावा ये sphenopalatine है, sphenopalatine is a branch of maxillary, third part of the maxillary की ये branches है, they also supply the lateral wall of the nose. anterior aspect पे आइए, ये facial की branches है, ठीक है। and then this is the greater palatine, greater palatine की branch देती है, greater palatine once again is a branch of maxillary, okay. So all these contribute to the arterial supply of lateral wall of the nose. Now comes the
nasal septum. More or less यही branches हैं. You have the anterior thyroidal, ophthalmic key. You have the posterior thyroidal, once again ophthalmic key. You have a sphenopalatine maxillary key, third part. You have this greater palatine. Greater palatine up यहाँ पे, in order to reach the septum, it passes through the incisive canal. This part, ठीक है? Then यहाँ पे ये septal branch है, facial की, superior labial branch है. Okay, so all these branches let me go ahead because this is extremely important. Okay, all these branches, they anastomose with each other. At this point is anteroinferior aspect of the medial wall of the nose. So मैं enumerate करती हूँ anterior ethmoidal, posterior ethmoidal, sphenopalatine, greater palatine, septal branch of the labial, which is branch of facial. All these branches, they give medial and lateral branches that anastomose with each other. In this particular point, they form a plexus and anastomosis. This area is called Kesselbach's area. Kesselbach's area. Okay? This is extremely important आपके practical clinical point of view से, आपके examination point of view से, because this is the area from where nosebleed occurs. बाज़ बच्चों को, बाज़ लोगों को लक्सीर फूट पड़ती है. The nose starts to bleed for nothing at all. ठीक है? So this is the area where nosebleed occurs. Nosebleed is called epistaxis. Okay? So that is why this is very important. Venous drainage पे आ जाते हैं. Venous drainage में एक तो sphenopalatine arteries, they drain into veins. Sphenopalatine veins, they drain into pterygoid venous plexus. You have ophthalmic veins, anterior and posterior together, they drain into the cavernous sinus, pterygoid venous plexus, जो भी हो. And then of course facial veins, वो आपको पता ही है. External nose की भी drainage है. वो facial veins के through होती है, angular veins, which is branch of continuity of the facial, ठीक है, lateral nasal veins. All these contribute to the venous drainage of nose. Nerve supply आपके examination point of view से somehow बहुत important है. अभी तक जो कुछ किया है वो समझ आ गया? Do we have any questions? It seems no. समझ आ गया. Good. Thank you, my dear. अच्छा जी. So we have 103 students. That's good enough with me. बेटा ये जो nose है ना, इसको हम venous drainage repeat कर दो. Fine. कर देती हूँ. Venous drainage of the nose. ये देख लीजिए. बेटा ये जो venous drainage of the nose है ना, वही arteries को follow करते हैं veins. So इसमें sphenopalatine, इसमें facial भी होगी. यहाँ पे sphenopalatine थी, यहाँ पे facial artery थी, और यहाँ पे ophthalmic arteries थी, anterior posterior ophthalmic. उनके साथ dumping veins हैं. So ophthalmic veins, from here ophthalmic veins, ये ophthalmic veins जो हैं, they drain into cavernous sinus. Also indirectly into the pterygoid venous plexus. लेकिन by and large cavernous sinus याद रख लीजिए. Then comes these veins running with the. ये area was the sphenopalatine artery. So you have sphenopalatine veins over here. These sphenopalatine veins,
they drain into pterygoid venous plexus. अब ये एंटीरियर एरिया आ गया, ठीक है, यहाँ पे सेप्टल ब्रांचेस थी, फेशियल्स है, सो ये एरिया फेशियल वेन में ड्रेन करेगा, ओके। एक्सटर्नल नोज बाय एंड लार्ज फेशियल वेन्स, एंगुलर भी फेशियल की वेन ब्रांच है, लैटरल नेजल ये सब फेशियल की ब्रांच है, सो बाय एंड लार्ज एक्सटर्नल नोज receives its supply from facial vein. अब ठीक है, you're welcome my dear, you're always welcome. Okay, nerve supply पे आ जाए। तो मैं बात कर रही थी कि the nerve supply is extremely important. We divide the nose, especially the nasal septum, ठीक है, into two, anterosuperior, posterior. कैसे डिवाइड करते हैं? यहाँ पे nasal spine है, so you draw a line from the nasal spine going back to the sphenoethmoidal recess. Approximately this is the site where you have the sphenoethmoidal recess. यहाँ पे nasal spine है, so इन दोनों को join करें by a line. Above the line and below the line, the nerve supply is kind of different. अगर हम septum की बात कर लें, posto-inferior, इस area की बात कर लें, septum of the nose, this area, posto-inferior part, ये nasopalatine branch of maxillary से supply होती है, ठीक है, nasopalatine branch of maxillary से supply हो रही है, और ये anterosuperior part, anterosuperior को अगर हम लें तो फिर ये एथमोइडल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल, जो कि ब्रांचेस हैं नेजोसिलरी की, ठीक है। सो नेजोसिलरी, आई होप यू रिमेंबर, इज अ ब्रांच ऑफ ऑफ्थेल्मिक. सो यू हैव ब्रांचेस फ्रॉम मैक्सिलरी, नेजोपैलेटाइन जो कि पोस्टो इंफीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही है, और एंट्रो सुपीरियर को anterior ethmoidal और posterior ethmoidal nerves जो कि nasociliary की branches हैं. And then of course don't forget after roof में you have olfactory nerves, वो हम will discuss them a little later. Lateral wall of the nose पे आ जाते हैं. Lateral wall ये देख लीजिए. Once again, posterior-inferior, antero-superior. Antero-superior ये पार्ट है. Antero-superior को anterior ethmoidal ही करेंगे, जिस तरह वहां पे किया था, ठीक है. ये ophthalmic की branch है. And then over here you also have a branch from the maxillary, anterior superior alveolar. Maxillary की branch anterior superior alveolar. ये antero-superior area को, this area. अब ये inferior, posterior-inferior. इसमें आप ये देख लीजिए, यहाँ pterygopalatine ganglion पड़ा हुआ है. Pterygopalatine ganglion was hanging by the maxillary nerve. So ये pterygopalatine ganglion gives branches to the lateral wall of the nose. क्या branches देती है? Posterior superior lateral nasal देती है, inferior lateral nasal branches, ये सब pterygopalatine ganglion की branches है. ओके, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. Anterosuperior part में anterior ethmoidal ये देख लीजिए. Plus you also have a contribution from over here in this part. Sorry, ये इधर anterior superior alveolar. इसका नाम ही anterior superior alveolar है बेटा. तो वो सप्लाई भी वहां से करेगी. ओके, ये maxillary की जो है ब्रांच है. उसके अलावा यहाँ पे पोस्टो-इंफीरियर में pterygopalatine ganglion, this is the pterygopalatine ganglion. तो इस pterygopalatine ganglion में you have
branches coming from it. ये branches जो हैं posterior superior, lateral nasal, ये lateral wall को कर रही हैं, and you also have inferior lateral nasal. Okay. This is exactly what is written in your book, word for word. And then nose का dorsum. आपको पता है from here to here. This is the dorsum of the nose. So dorsum of the nose, at the top root पे you have the supratrochlear ophthalmic की branch है. Then you have the external nasal. Sorry, supratrochlear नहीं infratrochlear. I'm sorry. Supratrochlear medial aspect पे करेगी, medial side, upper part of the eye को करती है. Infratrochlear nerve है, ophthalmic की branch होती है. Then you have the external nasal, ये anterior ethmoidal की branch होती है, ये भी dorsum पे करेगी. ये दोनों branches इस area को करते हैं. जो infratrochlear है, that supplies this part, the root. और जो anterior ethmoidal है, this supplies the dorsum. ठीक है? And then the ala of the nose, ये side, ये nostrils वाला part है. This part is supplied by branches of the infraorbital. And if you remember, the infraorbital was the terminal branch of maxillary nerve. Is this thing clear? Any questions? Because यहाँ पे ये खत्म है. We start with the next thing. That is the olfactory nerve, the first cranial nerve. So before we go on to the first cranial nerve, do you have any questions from what we've done just now? So today we do the lateral wall की nerve supply repeat करता हूँ. Lateral part wall of the nose वही anterosuperior और posterior-inferior को. Posterior-inferior जो है, that is supplied by branches from pterygopalatine ganglion. ठीक है? कौन सी branches हैं? Posterior superior, lateral nasal, इधर, and then over here you have the inferior lateral nasal branches. ये और anterosuperior part को ले लें तो anterior ethmoidal की branches होंगी, and then you have branches from the maxillary, anterior superior alveolar, which is a branch of maxillary. Roof पे once again, a small part of the roof is supplied at the top of the lateral wall, does get its supply from the olfactory. अभी आ जाते हैं इसके ऊपर, olfactory पे आ जाते हैं. अच्छा जी, olfactory nerve पे आ जाते हैं, the first cranial nerve. So today we do the first cranial nerve, inshallah. We've already done the second optic, third oculomotor, fourth trochlear, fifth trigeminal, sixth abducent related to the eye, third, fourth, sixth cranial nerves were related to the eye, second optic eye की है, fifth हमने की हुई है trigeminal, sixth once again abducent जो है eye की है, seventh facial we've already done with the face, बाकी रह गई 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. ये अब आपको करवानी है. ठीक है? So inshallah I'll cover all that. Starting with the olfactory nerve. Olfactory nerve present starts in the roof of the nose. Roof of the nasal cavity was formed by the cribriform plate of the ethmoid bone. Okay? The cribriform plate of the ethmoid bone forms the roof of the nose. Cribriform plate का मतलब है कि उसमें सुराख होते हैं. It has holes in it like this. This is the cribriform plate of the ethmoid. और इसमें ये holes हैं. ठीक है? अब covering this
cribriform plate of the ethmoid, like everywhere else. In the nose, you have mucous membrane. So ये सारी mucous membrane है. The difference between the mucous membrane covering the lateral and medial walls and the mucous membrane covering the roof, the cribriform plate, is कि जो cribriform plate को mucous membrane line कर रही है, that contains receptors. Receptor cells. अब ये receptors जो हैं, basically they are bipolar cells, bipolar neurons. हमने bipolar neurons earlier on पढ़े थे. I don't think you remember. I don't expect you. We studied the bipolar cells of the retina. Retina के cells bipolar cells थे. ठीक है. दूसरा example bipolar cells का olfactory mucous membrane है, जिसमें ये bipolar cells होते हैं, जो receptors होते हैं. Bipolar means दो poles हैं. So it has a dendrite and it has an axon. अब ये dendrite है periphery की तरफ. This dendrite, at the surface of the mucous membrane, the dendrites divides into multiple branches. These branches are called cilia, short cilia. ये mucous membrane के ऊपर जो secretions होती हैं ना, उन secretions में ये cilia पड़े हुए हैं. इनको olfactory hair भी कहते हैं. These olfactory hair get stimulated by any smell surrounding. अगर कोई smell आ रही है, something smelling nice, food, anything, cold drinks, etc. Everything has a smell. So that smell stimulates. Obviously, if it's a bad smell, तो inhibit ही करेगी. लेकिन stimulation जो है, good, any good smell stimulates these cilia, olfactory hair जिनको कहते हैं. अब these cilia, I told you, were simply subdivisions from this peripheral process या dendrite of the bipolar cells. अब इस bipolar cell का एक axon भी है. This axon and the axons of other bipolar cells, they collect and they form the olfactory nerve here. So the axons of bipolar cells, they collect and form the olfactory nerve. This olfactory nerve passes through the cribriform plate of the ethmoid. And after emerging from the upper surface of the cribriform plate, these axons of the olfactory nerve fibers कह रहे हैं, basically हैं तो ये axons of bipolar cells. इनके जो axons हैं, they make up the olfactory nerve, and this olfactory nerve then goes and releases in this structure which is called olfactory bulb. ये olfactory bulb में जाके ये रिले करता है. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? Any questions so far? बेटा, this is very important. ठीक है, और अगर कुछ भी ना समझ में आए, प्लीज मुझसे पूछ लीजिए. Olfactory bulb के बारे में बात कर लेती हूँ. Olfactory bulb, you can see, is lying on top of or on the superior surface of the cribriform plate of the ethmoid. जी फरमाइए. मैम रिपीट कर दें. Go ahead. Okay, fine. फिर रिपीट कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है बेटा. लेकिन एट द एंड मुझे ये नहीं कहना है कि हमें पढ़ाया नहीं गया या हमें समझ नहीं आई. अभी जो कुछ पूछना है पूछ लो. सब स्टेज में मैंने देना ही देना है, 100% देना है. This is my favorite nerve because somehow it's an extremely important nerve. आपका सारा स्मेल जो है वो सब इस पे डिपेंड करता है, और आप लोगों को बात ही नहीं होती है ये. ओके, ये जो nerve है, this is concerned with the sense of smell, and it is associated with the roof of the nose. Roof of the nose is formed by cribriform plate. The roof of the nose and elsewhere, all over.
The nose is lined by mucous membrane. Lekin the difference between the mucous membrane lining the lateral and medial walls of the nose and the roof of the nose is the roof of the nose may you have these neurons. They are receptor cells. They are bipolar cells. Physiology में आप nervous system कर रहे हो, कई हफ्तों से कर रहे हो, ठीक है? So आपको basics सारी आती हैं. Axon, dendrites, I don't have to tell you all that. So bipolar cells का दूसरा example optic nerve है. Optic nerve के receptors भी bipolar cells हैं. Olfactory, first cranial nerve, उसके भी bipolar cells हैं. ठीक है जी? अच्छा, ये जो peripheral processes या dendrites of the bipolar cells, they actually extend up to the surface of this mucous membrane. At the surface of the mucous membrane, you have secretions that arise from the mucous membrane. In secretions, this layer of secretions lining the mucous membrane, the pink color that you see, यहाँ पे ये dendrites, they divide into multiple branches. These multiple branches are called, ये short cilia के तौर पे behave करते हैं, and they are called olfactory hair. ये cilia जो है olfactory hair, ठीक है? ये the other process of this dendrite is the axon. ये तो dendrite था. अब इस bipolar cell का दूसरा process जो है, bipolar means two poles. From one pole arises the dendrite, जिससे olfactory hair या cilia arise किए. The other process is the central process, the axon. Central process is the axon. This axon and surrounding axons, they collect together and form this structure which is called olfactory nerve. So olfactory nerve is formed by the central processes of bipolar cells present in the mucous membrane of the olfactory mucous membrane present on the under surface of cribriform plate. Ab ye olfactory nerve, this passes through the cribriform plate. The holes in the cribriform plate transmit the olfactory nerve, and these olfactory nerves go and relay in the olfactory bulb. Axons of bipolar cells, unse olfactory nerve bani. Olfactory nerve pass ki through the cribriform plate. Cribriform plate se olfactory nerve that goes and relays in olfactory bulb. Olfactory bulb, that is an oval structure. Okay? This oval structure is lying on the upper surface of cribriform plate of ethmoid. Up is olfactory bulb mein you have different types of cells. Ye the largest in number and largest in size are the mitral cells. Ye. Then you have other cells, jisme tufted cells bhi hain, granular cells bhi hain. Lekin the largest is the mitral cells. अब ये भी न्यूरॉन्स हैं, तो अगर न्यूरॉन्स हैं तो फिर इनके एक्सॉन्स भी हैं या डेंड्राइट्स भी हैं. ठीक है? So the dendrites of the mitral cells, they anastomose with the axons of olfactory nerve. Olfactory nerve basically axons in bipolar cells. So ये जो axons हैं that make up the olfactory nerve, ये anastomose करते हैं with the dendrite of the mitral cells. अब ये जो area जहाँ पे ये anastomosis हो रहा है between the axons of the first cranial nerve and the dendrite of the mitral cells present in the olfactory bulb, इन areas को
synaptic glomeruli कहते हैं. Okay, they are called synaptic glomeruli. अब इस mitral cell, अच्छा अब एक बात याद रखिए कि ये जो अनास्टोमोसिस है ये बाकी सेल्स के साथ भी हो रहा है. टफ्टेड सेल्स, ग्रैनुलर सेल्स, ये सारे जो हैं they all anastomose with axons of first cranial nerve. लेकिन since the number of tufted cells and granular cells is far less compared to the mitral cells, that is why हम mitral cells को याद रखते हैं कि उनके साथ anastomose किया फर्स्ट क्रेनियल नर्व के एक्सॉन्स ने, बाकियों के साथ भी करती है. अब आ जाते हैं दूसरे एंड पे, और दूसरा एंड ये है कि डेंड्राइट्स ऑफ द माइट्रल सेल्स, ये तो अनास्टोमोस कर गए एक्सॉन्स ऑफ फर्स्ट क्रेनियल नर्व. अब इस माइट्रल सेल के एक्सॉन्स भी हैं. दीज एक्सॉन्स रन पोस्टीरियरली एंड दे join together and they make up the optic tract. ऑप्टिक ट्रैक्ट नहीं है, सॉरी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है. ऑप्टिक ट्रैक्ट नहीं बनता है बेटे, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनता है. ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगी प्लीज. ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है ये. ओके, ये जो है ना ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है. ओके सॉरी, ओके ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ ठीक लिखा हुआ है मैंने. ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, उसके पोस्टीरियर एंड से जो एक्सॉन्स थे राइजिंग फ्रॉम द सेल्स इन द ऑल्फैक्टरी बल्ब के जो सेल्स हैं मेनली इनमें माइट्रल सेल्स हैं. इन सेल्स के जो एक्सॉन्स हैं दे कलेक्ट टुगेदर, दे फॉर्म द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट. अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ये देख लीजिए. Above the cribriform plate of the ethmoid, ये cribriform plate of the ethmoid है, ये first cranial nerve axons है that go into the bulb of the olfactory bulb. So खुद देख लीजिए कि this olfactory bulb is lying on top of the cribriform plate. ये brain है, frontal lobe of the brain, आपने पढ़ा हुआ है physiology में. So this olfactory bulb is lying immediately inferior to the frontal lobe of the brain. So it is sandwiched between the cribriform plate of the ethmoid and frontal lobe of the brain. और bulb से you have the olfactory tract. अब नेक्स्ट इज कि जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, अच्छा दिस एरिया, ये तो आपको पता है ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक chiasma और ये ऑप्टिक ट्रैक्ट्स है. लाइंग इमीडिएटली लैटरल टू द ऑप्टिक chiasma is this area which is called anterior perforated substance. Anterior perforated substances को इसलिए कहते हैं because multiple blood vessels, arteries pierce this area और एक perforated appearance देता है. Okay, so that is why it's called anterior perforated substance. So when the olfactory tract reaches this area, which is the anterior perforated substance, the olfactory tract divides into two: a medial olfactory stria and a lateral olfactory stria. अब इनका एंड रिजल्ट क्या होता है बेटा, ये सब कुछ आपकी किताब से मैंने लिया है. दिस इज गिवन इन द चैप्टर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, ये वहां से देख लीजिएगा. ये आपके ये हेड एंड नेक के जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, नोज, ये नोज के साथ नहीं लिया हुआ, ये मैंने क्रेनियल नर्व वाले चैप्टर में से लिया है. सो जो बच्चे ढूंढते फिर रहे हैं कि ये मैंने पढ़ाया कहाँ से है, ये प्लीज मैंने वहां से पढ़ाया है. अच्छा जी, सो वन बाय वन रिजल्ट क्या है, एंड क्या है, हाउ डू दे एंड? मीडियल olfactory stria, lateral olfactory stria, ये देख लीजिए, ये perforated appearance है.
anterior perforated substance की. Olfactory bulb, olfactory tract, medial olfactory stria, lateral olfactory stria. Let's first do the lateral olfactory stria. The lateral olfactory stria, अच्छा इससे पहले, this is the frontal lobe. ये frontal lobe है, ये frontal lobe है, and this is the temporal lobe. ये temporal lobe है, ठीक है, ये सारा temporal lobe है. Over here, this is the temporal lobe. अब ये जो lateral olfactory stria है, this ends in the anterior part of the temporal lobe over here. इस temporal lobe में you have this area which is called piriform cortex. Basically ये olfactory cortex होता है. So ये lateral olfactory stria जो है that goes and ends in the olfactory cortex. ठीक है, olfactory cortex में जाके ये end करता है. It is when this olfactory stria ends in this olfactory cortex, yeah, piriform cortex. This is the area where we appreciate the sense of smell. ठीक है. So अब आप नोट कर लीजिए कि सबसे पहले मैं medial olfactory stria करवा दूं. Medial olfactory stria की बात कर लेते हैं. Medial olfactory stria crosses over to the opposite side, passing through the anterior perforated substance. इसको आप फिलहाल छोड़ दीजिए, ये जब ब्रेन करेंगे तो आपको बता देंगे. तो the medial olfactory stria यहाँ देख लीजिए, pass through the anterior perforated substance. So somewhere किधर गया मेरा cursor? Somewhere over here you have the anterior perforated substance. They pass through the medial olfactory stria, pass through the anterior perforated substance, and pass on to the opposite bulb. So medial side, right side के bulb से जो medial olfactory stria होंगे वो left side के bulb को चले जाएंगे, और जो left side के bulb के medial olfactory stria है, they cross over and end in the bulb of the opposite side. इस तरह ये क्रॉसिंग ओवर होती है. मैं lateral olfactory stria की बात कर रही थी. That ends in this piriform cortex. Piriform cortex is the olfactory cortex. So now this sense is going directly into the olfactory cortex. आपने पढ़ा है sensory system. आपको पता है कि all sensory nerve fibers go and relay in the thalamus. Thalamus is the largest sensory relay station. The only sense that does not go into the thalamus is the sense of smell. Because ये जो lateral olfactory stria है, ये thalamus में से गुजरते ही नहीं है, ये सीधा olfactory cortex में जाके relay कर जाते हैं. I think this is the last slide as far as nose is concerned. Next we start on to the pharynx. इससे पहले कि मैं pharynx start करूं, do you have any questions? Do we have any questions? Okay, fine. सब समझ में आ गया. मेरे ख्याल में ये आपने फिजियो में भी किया हुआ. Anyway, अच्छा जी, pharynx is the cranial. Actually, आज का टॉपिक तो pharynx ही था. Anyway, pharynx is the cranial most part of GI, gastrointestinal tract. The cranial most part is the pharynx. ठीक है, ये सारा, ये tri-colored. This is the pharynx. कहाँ से extend करता है? From the base of skull. ये base of skull है, base occiput है. ठीक है, this is the base of skull. Starting from the base of skull, it goes down to the cricoid cartilage. This, ये आगे larynx है. Larynx का ये cartilage है, cricoid cartilage. इसके inferior border पे जाके ये end करता है. ये larynx है बेटा. This is the pharynx. The posterior one is the pharynx. And at the lower border of the cricoid cartilage, the pharynx continues with the esophagus. The esophagus. ठीक है? So from the base occiput, it goes down to the lower border of the cricoid cartilage. Level अगर vertebrae में करूँ तो around C6 के level पे ये पड़ा हुआ होता है. It is widest at the level of यहाँ पे at the level of hyoid bone. ये hyoid bone है, so it is widest at the level of hyoid bone और narrowest यहाँ पे है
where the pharynx continues as the esophagus. This is the narrowest part. Okay. Up for the purpose of convenience, we divide the pharynx into three sub parts. From cranial to caudal, we have the nasopharynx, जो green में दिखाया हुआ है. Sorry. The oropharynx in the yellow and laryngopharynx, blue. Nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Up, this is the nose. ये आपको lateral wall और concha नजर आ रहे हैं. So nasopharynx is lying posterior to the nose. That is why it is called nasopharynx. ठीक है? Posterior to the nose कहाँ पे? ये soft palate है. ये hard palate है. This is the soft palate. So the nasopharynx is lying above the soft palate. Yeah. Behind the nose, above the soft palate. Oropharynx, अब ये oral cavity है, इसमें tongue पड़ी हुई है. Oropharynx is lying behind the tongue, behind the mouth. ठीक है? ये mouth की posterior opening है ना. And अब आ गया laryngopharynx, larynx. So it is lying behind the larynx. ये सारा larynx है. ये epiglottis आ जाता है. ये larynx की cartilages शुरू होती हैं. Parrot cartilage etc. ठीक है? So nasopharynx is lying behind the nose and above the soft palate, the green part. Oropharynx behind the mouth, the yellow part, and laryngopharynx behind the larynx. Laryngopharynx, by the way, is also called hypopharynx. Surgeons इसको, ENT surgeons इसको hypopharynx ही बोलते हैं. Okay. Let's start with the nasopharynx. We'll do a few facts about the nasopharynx and then we'll wind up. Actually, nasopharynx, ये बात, एक बात आप देख लीजिए कि posterior end of the nose, ये behind this is the nasopharynx. So ये जो posterior opening of the nose है, anterior opening of the nose आपको बताया था nares या nostrils कहते हैं इनको. Posterior opening of the nose, ये, this is called coine. Now ये concha नहीं है बेटा, ये coine है. ये देख लीजिए, posterior opening of the nose. ये nose है बेटा, ये posterior opening of the nose है. ये nasal septum है, posteriorly, vomer का बना हुआ nasal septum है. This opening is the coine. One's right side, this opening is the coine of the left side. So ये बात आज आप grasp कर लें कि posterior opening of the nose, the posterior opening that opens into the nasopharynx. We'll do this next time, inshallah. God bless you all. Thank you very much.